What is up, ladies and gentlemen? आज मैं लेकर आया हूँ news from Cyberpunk 2077. I'm just kidding. Talk of the weekend is Resident Evil 8 and आज मैं उसका trailer देख चुका हूँ. It's really amazing and would love to break it down to you. We all know her, Mia from Resident Evil 7. अब Resident Evil 7 की बात हो ही रही है तो मैं बता दूँ Resident Evil 8 is a direct sequel to Resident Evil 7. Now Resident Evil 2 and Resident Evil 3 इन दोनों के जो रीमेक थे they are not at all related to these two new reboots. पहले भी कहा गया था कि Resident Evil 4 का रीमेक बन रहा है जिसका नाम है Village. ऐसा नहीं है. Resident Evil 4 का रीमेक पूरी तरीके से अलग है. वो भी बन रहा है, वो भी हो रहा है, उसका भी काम चल रहा है. But this one is a different topic entirely. उन्होंने अभी तक कैपकॉम ने अभी तक पूरी तरह से ये रिवील नहीं किया कि व्हाट आर दे अप टू विद दिस फ्रेंचाइज जो Resident Evil 7 से शुरू हुआ है. दे आर नॉट टेलिंग इफ इट्स अ रीबूट और एनीथिंग या इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन बोथ ऑफ देम बिकॉज Chris Redfield is in this chapter. Chris Redfield is in this lore, which means Leon Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine, ये characters भी कहीं ना कहीं आएंगे बाद में और maybe these guys are trying to merge two lores in one. जैसे कि मैंने अपने during the story trailer was going on मैंने कहा था कि Resi 1 का थोड़ा vibe दे रहा है because Resident Evil 1 में you see a mansion, you go in the mansion, most of the times you see the ambiguity of the mansions, but below the mansion there's a lab and there's all the sinister stuff going on. I believe they're trying to go through that as well. इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये गेम खराब रहेगा या बकवास रहेगा. It will be very 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 scary and very 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 much fun. Look at those zombies. They are different. Now in Resi franchise they बाद में उन्होंने वो zombies के जो features है वो सब मतलब zombies के जो originations है वो थोड़े अलग अलग बताए because obviously they don't want to go with that T-virus thing again and again and again and again. जैसे कि Las Plagas is the virus which is injected into the people and then they become what they are, like zombie-ish. Ouroboros is something which is in Resident Evil 5. Ganados is something I believe Ganados is for Resident Evil 7. I don't know what they do with this in Resident Evil 8. The Village. अब ये गेम प्ले IGN का है. Maiden is the name of the gameplay. सादा सिंपल सा डेमो है. इट्स ओनली एंड ओनली अवेलेबल ऑन PS5. PC वालों को या फिर ओल्ड जेन कंसोल्स को या फिर Xbox वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बट डेमो ज़रूर आएगा. यूजुअली रेजिडेंट कैपकॉम ऐसा करता नहीं है. कैपकॉम अपना डेमो हर कंसोल पे हर प्लेटफॉर्म पे लाता है बट सिंस PS5 इज़ राइट नाउ द हॉट पैनकेक थिंग आई बिलीव आई वेजर दे आर द वंस हु आर बिलीविंग एंड डिसाइडिंग कि ओके let's make it console selling video games, so let's put it this way that yeah, the demo will eventually only and only right now coming on PS5. Speaking of PS5 2nd of Feb को हमारे हाथ में भी आने वाला है, so we would love to try this game as well. Demo will be there for good, so ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि डेमो खत्म हो जाएगा डेमो चला जाएगा, ऐसा नहीं है. इट विल बी अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल. नाउ स्पीकिंग ऑफ रेजी डेमोज, सिंस रेजिडेंट इविल 7 इनके डेमोज जो होते हैं वो डेमो नहीं रहते. दे आर प्रीटी मच अनकन्वेंशनल. उनके डेमोज में भी स्टोरी लाइन होती है. दे ट्राई टू गिव यू काइंड ऑफ अ प्रोलॉग और अ प्रीक्वल टू व्हाट मस्ट हैव हैपेंड बिफोर व्हाट विल हैपन इन द रियल गेम. लाइक रेजिडेंट इविल 7 में एक इन्वेस्टिगेटिंग एक गोस्ट हंटिंग इन्वेस्टिगेटिव टीम जाती है वहाँ पे एंड थिंग्स गो साउथ एंड दे आर ऑल स्क्रूड अप एंड ऑल दैट एंड देन ईथन विंटर्स आर प्रोटैगोनिस्ट इवेंचुअली कम्स इन रेजिडेंट इविल 7 एंड फिगर्स आउट व्हाट मस्ट हैव हैपेंड. अगेन विलेज की अब बात करेंगे. इट्स नेम इज मेडन. दिस डेमोज नेम इज मेडन विच मीन्स दिस इज नॉट ईथन विंटर्स. दिस एक्चुअली इज अ मेडन हु इज डम्प्ड बिलो द हाउस. ये बेसमेंट है और यहाँ पे काल कोठरी है और यहाँ पे maidens को रखा जाता है who are rejected kind of. So yeah, it would be pretty much amazing to figure out what exactly is going on in this mansion and why those females upstairs are the ones deciding that this maiden is worthy enough and this maiden is not, and why they are put down here under hell if they are not worthy. Resident Evil franchise, since Resident Evil 7 is all about beauty within the disparity. अब मैं meaning बताता हूँ क्या exactly. This beautiful mansion has so many sinister stuff going on within itself and that's what the disparity is. This maiden right now, I would wager ये demo चल रहा है and eventually by the end of the demo जब till she reaches at the point Z, she will be eventually dead and then
the story of Ethan Winters will kick in and trigger. Now, so most of you must be thinking that, yeah, Resi 2 and Resi 3 remakes were third person. Why is this first person? Well, like I said, ये continuity नहीं है for Resi 2 or Resi 3. This is the continuation of Resi 7, which was in itself a reboot, a kind of a reboot, या soft reboot बोल सकते हैं, which was in first person. So that's why the trend is continued and it's in first person as well. Though I would wager I would love the third person perspective. Personally, मुझे ऐसा लगता है कि third person is much better. But the thing is that since there are hodgepodge नहीं होती है चीज़ें, you don't get confused like what the hell is going on and all that. So that's why the first person perspective here fits in really well. It gives the developers, right, at least the RE engine developers, it gives them that liberty ki हाँ, okay, we can do whatever we want to and we can show whatever we want to, rather than the gamer, being in control. They don't do that. They don't want that. They want themselves to be under the control and they want the game to control you and let you abide by it. अब जैसे कि मैंने कहा था कि villains in Resi 7 were something to reckon with. Jack Baker, the sons, the wife, they were all amazing, and it would be really difficult for the villains in this game to just top that up or at least level it up. Now this looks pretty much promising in whatever I see. This female over here is pretty much menacing, but मैंने पिछले trailer में भी देखा था that I think there are a couple of them or 3 of them, so we have to beware of them. Mostly I believe this is the tier 1 villain we are facing right now over here in this demo, और ये थोड़ा सा ही झलकता और थोड़ा सा ही रहेगा. Eventually, yeah, this female comes in and she will stab you wherever she finds it convenient. But having said that all, ये जो यहाँ पे दिख रहा है PIP में, this guy, I am pretty much intrigued to face this guy. He's menacing as well as stylish in the same time. Many of the people on Twitter said that he kind of gives you a vibe of Dante, the white hair Dante of Devil May Cry 5. इसमें Umbrella के intentions क्या है? Umbrella Corp, उसके intention क्या? Because Umbrella is legitimately in this lore as well. Mia was Mia was working for Umbrella, so we would love to see what exactly is Umbrella up to. जो पिछले ट्रेलर में अभी वाले ट्रेलर में जो हमने देखा that Chris Redfield was carrying a baby in his arms. So whose baby was it? I believe it was, I wager and assume it was Ethan's and Mia's baby. And what exactly the purpose is served when it comes to that baby, अभी वो भी देखना बाकी है. Lots of things to be figured out yet. उन्होंने ambiguous रखा है, उन्होंने छुपा के रखा है, which is really good. ट्रेलर में भी ज़्यादा चीज़ें मालूम नहीं पड़ती है. There are too many things over there, but still you can't figure out. वो एक और एक दो करके तुम figure out कर नहीं सकते हो that what is going on in this village. But मैं इतना खुश हूँ. मुझे लगा था Village is basically the remake of Resi 4. It's not at all. It's made from ground up. It's made from scratch up, and it looks legitimately good. Do let me know in the comment section down below आपको क्या लगता है. Resident Evil 8 आप खरीदोगे, खेलोगे, या पहले लोगों को खेलते हुए देखोगे, उसके बाद फिगर आउट करोगे कि हाँ खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए. या आपको पजल जैसे गेम जिसमें इसमें पजल एलिमेंट्स बहुत रहेंगे, कूट के रहेंगे, तो आपको ऐसे गेम्स पसंद है, या आपको मोस्टली एक्शन पैक गेम्स पसंद है जैसे कि Resident Evil 2 था या Resident Evil 3. मैं रीमेक्स की बात कर रहा हूँ, पिछले ओरिजिनल आइटरेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ. सो डू लेट मी नो दैट एज वेल. ऑल्सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आइए, हमारे साथ बैठिए, बात करिए, एंड यू विल गेट टू नो व्हेन वी गो लाइव एज वेल विद द वीडियो गेम्स एंड स्टफ. लाइक आई सेड, 2nd of February PS5 हमारे हाथ आने वाला है, एंड वी गोना tap into all this. मेरा माइक हिल गया. We're gonna tap into all this and everything, whatever PS5 is covering. So yeah, I'm very excited about that. But till then, this is me, Shardul, signing off from Dose of Steroid. Bye bye.